A very good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affairs teacher, and this is a very beautiful morning to start with the current affairs. As with this, I remember John Dewey's quote as he says that education is not preparation for life, education is life itself. So, for UPSC aspirant and for any government preparation examination, this daily news is that life, the living classroom where ideas, policies, and people shape your understanding of the nation, right? So, if you study current affairs every day, you are not just preparing for an exam. What you are doing, you are preparing to think, to lead, and to serve, right? And this is what we'll do today. We'll lead and we'll understand that what is going in the society. Now, moving to the first current affair, as it says that citizenship not given for CAA applications, Supreme Court. Now, before this, let's understand what CAA is. So, this Citizenship Amendment Act that came in December 2019, what it said? What was the blunder about? Do you remember? So it says that people who came to India, right, before December 31, 2014, right, from Pakistan, Bangladesh, or Afghanistan, right, and belong to 6 religious communities, minorities, that is Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian, right, they can apply for Indian citizenship, right, and if they face religious persuasions in these countries, then they can apply for it, right. So earlier they had to wait like for 11 years, but now then it turned to 5 years. Okay. And it came with different rules and regulation, as it mentioned that it does not take away citizenship from any Indian citizens. Okay. So all these quotations which were coming up, right, rumors which were coming up, so it was cleared by the government कि ना तो किसी का citizenship लेगा जो Indian citizen पहले से है, right? And then another thing, it does not apply to Indian Muslims, right? Third thing, it does not force anyone to prove their citizenship, and fourth one was it does not create a nationwide NRC by itself, right? So this is the background story of CAA. I hope this is understood to you. Got it? Now let's understand what the news is all about. Okay. So now it is early December 2025, right? And the Supreme Court of India is hearing petition that raises a sensitive and a very important question that can refugees who are like under CAA but who have not yet got the citizenship formalized be included in voter list during the ongoing this legalized reparations or not, right? So this is the question that has been asked, right? So now the background story is that under CAA, certain persecuted minorities from Afghanistan, like I explained it to you, Bangladesh or Pakistan, arriving from the cutoff date, right? If they are eligible to apply for Indian citizenship under more like legal conditions or not, right? So many such individuals have applied to this, but their citizenship applications are still pending, right? Now when the elections are coming up with, right? So there's this NGO who filed the petition regarding this, right? Now what this NGO says कि अब finally investigation तो हो ही रही है, right? So why don't you allow them कि वो वोटिंग अपना कर सके, या फिर जो भी हमारा जो प्रायोरिटी है, राइट, अकॉर्डिंग टू द वोटर लिस्ट उसको थोड़ा और जल्दी कर दिया जाए, राइट? So this Supreme Court replies, right? And what kind of reply Supreme Court gave, right? What conditions it was made? तो हम सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे, right? Now, so what happened that in states like West Bengal, this Election Commission of India is conducting a large exercise called Spatial Intensive Division. Do you remember SIR? ठीक है, prelims में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. So this SIR of electoral rolls meant to update as it is verify and clean up and voters list ahead of electorals, right? So as NGO filed a petition, that petition has been filed by the NGO that is seeking direction that CAA eligible migrants, जितने भी migrants हुए हैं, right, और जिन पर ये civil inquiry चल रही है, if they are eligible to vote or not, right? So what they say is even while their citizenship status is pending, right, so should be provisionally included in electoral rolls or not, right? Otherwise they'll risk losing their names, right, and becoming disfranchised. ठीक है, उन्हें मौका नहीं मिलेगा to vote, right? So this is what this NGO is asking about, and this is for they like file the petition. Okay.
Now, in response, what happened? That Supreme Court bench that is headed by the Chief Justice questioned this demand. Okay? The court asked that how can someone who is not eligible, right, who is not citizen yet, right, be given the right? So with this, the question has been asked by the Supreme Court only, right? So the court pointed out that granting citizenship or even confirming it, right, it is a precondition, right, and only after someone can be eligible to enter electoral rolls. So अगर इसको छोटे में समझा जाए तो बेसिकली सिटीजनशिप पहले आती है और उसके बाद आता है हमारे पास वोटर स्टेटस. पहले सिटीजनशिप प्रूव करो, राइट, और उसके बाद अपना वोटर स्टेटस ले लो, देन यू आर एलिजिबल टू वोट, राइट. दिस इज व्हाट द कोर्ट इज सेइंग, राइट. Now then the court's view is that there must be some application under CAA and it does not automatically entitle person to be. What this means that their eligibility must be verified, right? It should be known first, right? It should be enforced first. पहले सिटीजनशिप ग्रांट करो एंड देन दे ऑल कैन बी एडेड टू द इलेक्टोरल रोल्स. ठीक है, तो जो बेसिकली दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन एनजीओ एंड द कोर्ट. ठीक है, समझ में आई कहानी? Now why this is important? This is important because of GS paper 2, right, as it talks के रोल्स के बारे में हमें बताता है. दिस इज व्हाई इट कम्स इन द जीएस पेपर 2, राइट. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू कम लाइक इट इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1 बिकॉज इट कम्स अंडर सोशल इश्यूज. ठीक है, सोसाइटी के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, राइट, एंड अबाउट माइग्रेशन और इंटीग्रेशन के बारे में, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में. देन इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1 बिकॉज इट टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटी अंडर इंटरनल सिक्योरिटी और माइग्रेशन, पॉपुलेशन मूवमेंट के बारे में एंड सोशल इंटीग्रेशन के बारे में, राइट. ओके, another pattern that we have to follow again. अब तुम अपनी वोटर आईडी को ना ऐसे लेके चलो दैट इट इज लाइक अ मेंबरशिप कार्ड. ठीक है, अब यू कैन ओनली गेट दैट कार्ड इफ यू आर ऑफिशियली अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वो कार्ड तुम्हें मेंबरशिप कार्ड तभी मिलेगा अगर तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो, राइट. अगर सीए के अंदर उसके अंदर जो रूल्स मेंशन किए गए इफ यू आर फिटिंग इन दैट क्राइटेरिया, राइट, देन ओनली यू विल बी गेटिंग दिस कार्ड, राइट. So just applying for citizenship in India is not enough now. You must actually receive it, right? So this is exactly what the Supreme Court explained in this case. तो इश्यू ये हुआ कि एन एनजीओ वांट द सुप्रीम कोर्ट विद द रिक्वेस्ट. उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि कोर्ट को रिक्वेस्ट करी कि अभी जो है टेम्परली ऐड कर दो उन लोगों को जो अभी प्रॉपरली सिटीजनशिप में नहीं आते हैं, राइट. टेम्परली ऐड कर दो क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, राइट. So CAA refused to the voter list in the West Bengal while the Citizenship Act application are still, being processed. So this request was made during a major voter list update, as it was happening in many states, जैसे कि हमारे पास अभी बंगाल में होने वाले, right? So this called a spatial intensive revision, that is SIR. Now NGO's logic was कि क्योंकि बहुत लोगों ने citizenship अप्लाई की है under CAA and at least let them be included in provisionally temporarily in the voter list. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पर इसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिटीजनशिप पहले आती है और उसके बाद आता है हमारा वोटर आईडी. ठीक है, तो जज ने ये बोला है कि पहले अ पर्सन कैन नॉट वोट अनलेस दे आर ऑलरेडी इंडियन सिटीजन. ठीक है, और जस्ट अप्लाइंग फॉर सिटीजन इवन अंडर सीएए डज नॉट मेक समवन अ सिटीजन. ठीक है, जब तक वो एलिजिबल नहीं होता है अंडर द कंडीशन दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द सीएए तब तक उसको वोटर आईडी नहीं मिलेगी, राइट. सो देयर refugee cannot be added to the voter list. ठीक है, एंड नॉट इवन टेम्पररली. ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि एप्लीकेशन जो है वो खारिज कर दी गई अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप, राइट. सो देयरफॉर नो सिटीजनशिप, नो वोटर स्टेटस फॉर दोस पीपल हु हैव अप्लाइड एंड स्टिल दे आर नॉट वेरीफाइड. ठीक है, अब ये कोर्ट ने ये प्रोविजनल स्टेटस के लिए मना क्यों किया फॉर वोटर स्टेटस? सो दिस बेंच दैट इज इंक्लूड सीजीआई सूर्यकांत, जिनके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी एंड आई होप दैट यू हैव सीन इट, एंड जस्टिस जोमालिया बागची, उन्होंने बोला है कि if someone is not legally recognized as a citizen, ठीक है, तो then the electoral officers cannot treat them as voters, है ना. फिर उसके बाद प्रोविजनल इंक्लूजन के बारे में बात कही, जिसका मतलब है कि राइट ऑफ वोटर्स, ठीक है, एंड दैट इज ओनली फॉर द सिटीजन, राइट. सो इफ द कोर्ट रिफ्यूज द request that was given to NGO. Now, what about pending citizen applications? तो NGO also asked the court to order the government to finish all CAA citizenship quickly. कि एटलीस्ट अगर आप उनको टेम्परली नहीं दे रहे हो तो कम से कम आप ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करा दो ताकि इलेक्शन के टाइम से पहले वो अपना वोट दे सके, राइट. उन्होंने ये चीज करी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी मना कर दिया. व्हाई? बिकॉज द कोर्ट जॉब इज टू इंश्योर द लीगल प्रोसेस इज फॉलोड. ठीक है, जल्दबाजी में कोई चीज नहीं करनी है. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड, राइट. बट इट कैन नॉट फोर्स द गवर्नमेंट टू सेट अ स्पेसिफिक डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग ऑल द एप्लीकेशंस. ठीक है, एज सुप्रीम कोर्ट सेड प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो होना चाहिए विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, सारे अमेंडमेंट्स लेने चाहिए. उसके अलावा
ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट। सो कंक्लूजन ये निकला है कि पहले वेरीफाई करो लीगैलिटी एंड नॉट सेट टाइमलाइंस टू इट, क्योंकि अगर हम टाइमलाइन डाल देंगे इस पे तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो पाएंगे। अंडरस्टूड। अब ये इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में नाउ दिस इशू इज कमिंग, क्योंकि बहुत सारी स्टेट में जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, राइट, दे आर डूइंग अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ, एसआईआर का क्वेश्चन प्रीलिम्स में पक्का ही आएगा, ठीक है, इवन इन 2027 ऑल्सो। सो दिस इज व्हेन दे से दैट अपडेट वोटर लिस्ट, ठीक है, और अपनी रिमूव बेसिकली डुप्लीकेट जो है उनको हटाना और नए वोटर्स को ऐड करना, ठीक है, एंड दे शुड बी लाइक प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग इलेक्टोरल्स ऑल्सो, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी पीपल अप्लाई टू एडेड एज अ वोटर्स, ठीक है। This is why the NGO wanted CA applicants to be included right now. और अगर अभी include नहीं कर सकते हो तो at least make the procedure fast, so that those people who have applied under CAA they can vote before the election, during the election. Understood till here? I was not visible. I hope that this citizenship is understood to you. कि issue क्या था कि एनजीओ ने बोला कि हमें बेसिकली जो भी सीए के अंदर अप्लाई किया है, राइट, दे शुड बी लाइक given, and if not you are not giving them right to vote, then at least make the process fast, right? So with this supreme court stand that citizenship first and voter id later, ठीक है, temporarily भी उन्हें basically नहीं दिया जाएगा, they will not be counted as a eligible person to vote, right? So applying for citizenship and being citizens is not equal, so no person without confirmed citizenship can be included even temporarily in electoral rolls. आपको proper verify करवाना पड़ेगा, only then you will be eligible to it. I hope it is understood. अभी डिसीजन क्यों आया, क्योंकि वोटिंग सिटीजन इज ओनली राइट एंड प्रोविजनल वोटर स्टेटस जो है दैट वुड स्टिल गिव अ नॉन सिटीजन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट इज नॉट अलाउड, राइट। And with this we understood कि citizens can be a voter, so under CA applicants must wait until citizenship is officially granted to them. Proper verification होगी, only then it will come to us. क्यों मैटर करता है? This matters to us because this comes under GS paper 2, this comes under GS paper 1 and GS paper 3, and also you can write it under SC and ethics GS 4. Okay. This news understood? पक्का? Keywords लिखिए. Okay. Next news. The news is Trump threatens tariffs on India rise, but trade metrics shows pain will be felt by the US. अब Washington DC में at a White House meeting with US farmers, Trump heard complaints that cheap rice from abroad is coming, ठीक है, especially from India, ठीक है, and it is hurting American rice growers, ठीक है, जितना भी राइस बाहर से आ रहा है वो वहां के फार्मर्स को प्रॉब्लम दे रहा है, राइट। नाउ वन फार्मर फ्रॉम Louisiana claimed that India, right, and other foreigners, Indians also, other countries also, this rice was dumped, as this word was used, dumped, right? So this rice was dumped into US markets at price local farmers couldn't match, ठीक है, चीप दाम पे, ठीक है, चीप प्राइस पे वहां पर इसको बेचा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है एंड पीपल आर लाइक सेलिंग देयर, जो कि वहां की प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, राइट। सो रिगार्डिंग स्ट्रांगली ट्रम्प पब्लिकली क्वेश्चन दैट व्हाई इंडिया शुड बी अलाउड, राइट, अलाउड दे वर्ड यूज्ड, दैट to send so much of rice to the US without additional duties, and wanted that US may impose a new higher tariffs, ठीक है, they are going to impose new higher tariffs ताकि इकोनॉमिकली उन्हें फायदा हो एंड द प्रॉब्लम दैट दोस फार्मर्स आर फेसिंग, राइट, दिस कैन बी रिड्यूस्ड. And basically he declared that they shouldn't be dumping tariffs and solve the problem in 2 minutes. This was the statement that was given by the Trump, right? So while the US in India trade relations have like shaken, now what was earlier just part of like broader trade tension has now focused on rice, okay? So this a staple agriculture product and a major export for India, okay? So for India it is like a potential challenge because a tariff could make India rice costlier in US markets, and possibly it will like reduce demand also, ठीक है, and affecting the exporters, ठीक है, ये हमारे एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं नुकसान देगा, राइट. सो farmers and even broader trade balances could be seen over here. So for US farmer it is like a political win, right, the government signing support to shield them from the foreign competition also. So this decision that was taken over dinner table and trade deal
takes threat to after the global rice trade, right? जो कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा export हो रहा था to the US, right? Now this is highlighting how the politics, economics, domestic vote bank pressure could be created, and globally supply chains are deeply interconnected to this, right? And to this, now this is important because this covers GS paper 2, talks about international relations, right? India and US का trade tension create करता है, right? Because of the export of rice over here, right? Then diplomacy and negotiation, WTO का rule, tariff और protections के बारे में बताता है. GS paper 3 में it talks about economy, agriculture, external sector के बारे में and exports के बारे में, right? Impact on Indian farmers and marketers, commodities like basmati rice, role of trade policies, right? Then it is covering other factors also, other themes also, that is globalization versus protectionism, protectionism from India's side, right? And fair trade versus dumping allegations, impact of political decisions on markets, food security, farmers, income and trade ethics. So this is the dilemma that you can use in the ethics paper. ठीक है, the dilemma of fair trade versus dumping allegations. ठीक है, समझ में आई इतनी कहानी? Okay, now we'll understand easily exactly problem क्या हुई है step by step. Okay, so problem क्या हुई कि the president of the United States said that his government is thinking about adding new tariffs. ठीक है, extra taxes लगाए जाएंगे on rice imported from India. ठीक है, so he said that because more American farmers are complaining that India rice is coming to the US farmers and it is very cheap, right? And it is hurting our business. हमारे market places से India के market places पे match ही नहीं हो रहे pricing, right? So the accusation is called dumping, right? And selling goods in another country at lower prices than normal, right? So what the issue come up? The issue is that US president was meeting from like Louisiana, a state from where many rice farmers live, right? The farmer said कि इंडिया राइस जो है बहुत ज्यादा चीप है और हमारा अफेक्ट कर रहा है इनकम ऑफ यूएस राइस ग्रोवर्स को, एंड दे वांट प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ दिस. तो उन्होंने बोला कि ट्रम्प ने बोला कि ठीक है हम इस पे टैरिफ्स के लिए कंसीडर करेंगे, राइट? सो व्हाट बेसिकली व्हाट डज इंडिया एक्सपोर्ट टू द यूएस? इंडिया एक्सपोर्ट क्या क्या करती है? तो राइस एक्सपोर्टर्स बोलते हैं यहाँ पे इंडिया के, मोस्ट ऑफ द राइस सेंट टू द यूएस इज प्रीमियम राइस पत्ती, ठीक है, एरोमेटिक वेराइटीज यहाँ पे दी जाती है यूएस को, राइट? एंड दीज आर द स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, नॉट द यूजुअल राइट ईटन बाय द अमेरिकन डेयरी. जो वो खेलते हैं उससे ज्यादा बेटर हम लोगों ने देते हैं, राइट? एंड देन बिकॉज द राइस इज लाइक प्रीमियम एंड मोर एक्सपेंसिव, दे आर्ग्यू इट कैन नॉट बी कॉल्ड डंपिंग. So this is what Indian farmers, India is saying to the US, to the reply. Now, अगर हम समझे तो इंडिया बेसिकली ये बोल रहा है कि वी आर नॉट सेलिंग चीप राइस, कोई सस्ता माल हम बेसिकली नहीं बेच रहे, वी आर एक्सपोर्टिंग समथिंग वेरी नाइस व्हिच यूएस कैन नॉट हैव, राइट? सो वी आर सेलिंग स्पेशल कॉस्टली राइस टू देम, which means that we are like basically niche customers, right? They are like for the niche customers. So how much rice does India sell to the US? So only a small amount of India's total rice export goes to the US. छोटा ही अमाउंट जाता है यहाँ से, ठीक है? So the US is not a major buyer of India rice. Though if tariff increases, India exporters may not face a big bias. अगर वो टैरिफ बढ़ा भी देते हैं, टैक्स बढ़ा भी देते हैं, तो हमें ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, which is a good part, right? Now who will be affected because of this? बेसिकली इस पे इम्पैक्ट होगा इंडियन एक्सपोर्टर्स पे, क्योंकि जो स्मॉल है, छोटा ही सही, राइट? बिकॉज द यूएस इज नॉट अ बिग मार्केट ऑफ देम, बट देन अगेन स्मॉल पोर्शन विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, राइट? नाउ next is impact on American consumers. So people who prefer India's rice varieties, as I said कि basmati, right? It is not very cheap, right? Basically quality basis पर ये जाता है, right? तो ये basically include करें South Asian communities को and our restaurants that are in the US and household used in Indian style cooking. वहाँ की चीजों को affect करेगा because majorly जो है वो इन्हीं चीजों के लिए खरीदा जाता है, right? So these groups are going to have to like pay more for the same rices. And so the tariff might increase price in the US shops, but it will not drastically affect India, क्योंकि major rice exporter हमारा US नहीं है, right? US से नहीं है. Is this understood? Okay. So from this we got that president heard complaints from the farmers, right? And farmers alleged that Indian rice is too cheap and hurting our income. So with this, they came with a solution. The Trump came with a solution, and he says that they may impose new tariffs, नए tax लगाए जाएंगे Indian rice पे, right? So India is like standing with it. India says that mostly exporters permit aromatic basmati rice to the US. तो तुम इसे cheap या फिर dumping word नहीं बोल सकते हो, right? And this is not cheap rice, so the dumping accusation is weak. US is not a small market for Indian rice, as impact on India likely limited. क्योंकि ज्यादा export इंडिया का नहीं, इंडिया से वहां पे नहीं होता है, right?
वहाँ और भी कंट्रीज है जहाँ पे राइस का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, राइट. सो हु विल फील द इम्पैक्ट? इंडियन साइड, मिनिमल इफेक्ट ऑन एक्सपोर्टर्स, ज्यादा कुछ हमें फर्क पड़ेगा नहीं इससे. सो यूएस कंज्यूमर सेज द प्राइसेस ऑफ इंडियन बासमती में राइज इन यूएस स्टोर्स. जो इंडियन स्टाइल रेस्टोरेंट्स है, राइट, उनको ज्यादा पैसे में खरीदना पड़ेगा. बट देन अगेन ज्यादा कंज्यूमर्स वहां पे अगर है भी, ठीक है, बट सिर्फ यूएस कंज्यूमर नहीं है बासमती राइस का, राइट. देन यूएस फार्मर्स, दैट इज पॉलिटिकल सपोर्ट बूस्ट. आई होप दिस न्यूज इज अंडरस्टूड टू यू. Okay. Now coming to the next news. It is India Bloc MB submit letter to LS Speaker to move impeachment motion against Justice Swaminathan. Okay, very important news. So there is a hill near Madurai in Tamil Nadu which is called Tiruparakundaram on the hill. Right, on the hill there is like ancient temple, that is Arimulam, right? And basically this temple is very famous and very, very much controversial and very much in news क्योंकि इसके साथ में है दरगाह, right? And whenever, as I said before also, whenever it comes to religion, India is very sensitive, ठीक है. इन रिलीजन के नाम पे तुम इंडिया को कुछ बेच भी सकते हो, राइट. इंडिया के रिलीजन के नाम पे तुम यू कैन मेक देम फाइट आल्सो, यू कैन मेक देम आर्ग्यू आल्सो. वी आर सो सेंसिटिव, वी आर सो इमोशनल टुवर्ड्स रिलीजन एंड डाइवर्सिटी कि जब भी ये नाम आता है, ठीक है, हमेशा हम कंट्रोवर्शियल में रहते हैं, हमेशा हम न्यूज में रहते ही रहते हैं, राइट. सो इन द सेम वे दिस न्यूज हैज कम. तो हुआ क्या कि on December 1, 2025, a single judge bench of the Madras High Court, that is J.R. Swaminathan, which you have tried the name, Justice G.R. Swaminathan, that ruled that traditional lamp, that is Deepam, ठीक है, traditional lamp, that is Deepam, that is Deepam, right? So what happened? It should be like allowed to be lit on a particular stone pillar, ठीक है, that is Deepathul. So on the hill it should be lit. So even though the spot is close to the dargah, the judge rejected this obligation and said that from temple, the authorities and the dargah management, and directed that the small group of devotees could go there and escort them, ठीक है, escort them with the security and allow them to light the lamp there. तो उन्होंने बेसिकली रिलीजन को हटाते हुए दे गेव देम द अथॉरिटी कि तुम लोग जाओ, ठीक है, और जितने भी तुम्हें सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, यू कैन टेक दैट एंड यू कैन लिट द लैम्प, ठीक है. ये अलाउंस दे दिया गया बाय द जज, बाय द कोर्ट. So the order triggered the controversy, ठीक है. So this religious endeavored department which manages the temple, what it says that the state argued that historically that lamp was lit elsewhere, ठीक है, पहले कहीं और पर होता था, ठीक है, डिफरेंट टेम्पलर स्ट्रक्चर था. अब बेसिकली ऑर्डर जो है बेसिकली लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस में आया एंड दिस रेज द कंसर्न ऑफ लो एंड ऑर्डर कंसर्न, ठीक है. As a result of this judgment, what happened that over 100 member of parliament from the opposition blocks came under the banner of India Bloc, which you have to write down, have submitted a formal impeachment notices to the speaker of the Lok Sabha, removal of the Justice Swaminathan, ठीक है. अब इनको हटाने की बात की गई है. So the notice was signed by 107 to 120 MPs, which invokes constitutional provisions, Article 217 and Article 125, which we'll read further. So it talks about the removal of High Court judge on ground of misbehavior and incapacity, right? So this allegation is the notices are very serious as it accuses the judge of like judicial overreach, ठीक है. मतलब judicial overreach मतलब basically उन्होंने उस चीज का डिसीजन लिया जिनको उनके ऊपर राइट भी नहीं था, as it involves a religion, right? It claims that judge showed undue favoritism to the senior lawyer and advocate of a particular community, ठीक है. Now it alleges that some of his decisions are driven by political ideology and are like inconsistent with the secular principle of the constitutions, right? So by moving this impeachment notice, the India Bloc, good morning. So by moving this impeachment notice, the India Bloc has sparked a major confrontation between like the political legislation side, right, which is basically parliament, political parties, and the judiciary, right, which is raising deep questions about separation of powers, right. तो अगर हम बात करें कि ये important क्यों है, this is important for GS paper 2, right, and it covers polity and governance. It talks about judiciary, independence of judiciary, right, what kind of role it plays, right, and constitutional provisions, Art 124 and Art 217, which we'll read now. Separation of powers, right, for GS paper 1, that is society, religion, secularism की यहाँ पे बात होती है, right, who have the right, and if favoritism, right. Then communal harmony, which talks about social tensions also between the religion. GS paper 3, it includes internal security and sensitive religion dispute, which could be seen a lot when it comes to India.
तो हुआ क्या, हुआ ये कि ग्रुप ऑफ अराउंड 107 to 120 MPs केम राइट फ्रॉम इंडिया ब्लॉक और उन्होंने इम्पीचमेंट नोटिस साइन किया अगेंस्ट हाई कोर्ट जस्टिस ऑन December 9, 2025। ठीक है, तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है पार्लियामेंट से ये बोलने की प्लीज जो जज हैं अभी उनको यहाँ से हटा दिया जाए। अब ये रूल बोलता क्या है, तो बेसिकली ये रूल दो रूल जो आर्टिकल 217 और आर्टिकल 124 है जिनकी हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 124 है। Any idea was it? What is it? Yes, sorry, 217 and 124. So when we talk about 217, it deals with high court judges, right? And when it comes to 124, it explains the procedure to remove a judge, right? So together these articles describe to us कि कैसे एक जज को remove किया जाए अगर उसका behavior basically misbehavior वो कर रहा है या फिर वो incapacity में है या फिर वो ऐसे impartial decisions ले रहा है, right? So under these two conditions, under these two articles, that judge can be removed. ठीक है, अब हुआ क्या, ट्रिगर क्या हुआ कि कंट्रोवर्सी बिगिन आफ्टर हाई कोर्ट जजमेंट ऑन December 1, 2025. Did you write these articles too? Okay, so the judgment said that devotee should be allowed to lit the this deepam lamp on a pillar. ठीक है, तो बेसिकली जज ने बोला कि रिजेक्ट कर दिया जो भी ऑब्लिगेशन जो भी ऑब्जेक्शन आ रहे थे, राइट, दैट वाज रेज्ड बाय द टेंपल अथॉरिटीज एंड दरगाह मैनेजमेंट, जो भी उन्होंने अपनी कंसर्न्स दिखाए थे उनको रिजेक्ट कर दिया, राइट, एंड दे सेड दैट डिवोटी शुड बी एस्कॉर्टेड बाय सिक्योरिटी एंड लाइट द लैम्प. Now what the state government do, that the state government refused to carry out the court orders, right, and saying it will cause a law and order misuse, right. So अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो बेसिकली यहाँ पे impeachment notice आया है, right, as it says कि judicial overreach, which is a keyword which you have to write down. Judicial overreach is कि जब जज जो है basically it went beyond what the court should decide, right, and then it talks about कि basically favoring हुई है, favoritism हुआ है एक particular senior lawyer की वजह से, right, and this is like biasness which could be seen because of this decision. Then it talks about letting political ideology influence decisions and not acting against secular constitutional principle also, right. So these are like allegations and they are not like proven yet, but there is no findings to it, but these are the allegations that have been mentioned to us. अब इसके बाद इतनी कहानी में समझ में आई, तब ये समझते हैं कि अब इसके बाद होगा क्या। तो जब भी ऐसा कोई नोटिस जारी होता है, राइट, जब भी ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन दी जाती है तो जज रिमूव नहीं होता है, बट वो बेसिकली देयर इज अ एक्चुअल प्रोसेस टू इट। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ प्रोसेस आया नहीं है, बट देयर इज अ लाइक क्रोनोलॉजी टू इट। पहले स्टेप होता है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट, राइट, एडमिट द नोटिस और नॉट। जो भी एमपीज ने साइन किया है दैट पिटीशन, राइट, विल दैट बी एक्सेप्टेड, विल दैट नोटिस विल बी एक्सेप्टेड और नॉट, दैट विल बी स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2, अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर एडमिट कर लिया जाता है, तो देयर विल बी लाइक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और बेसिकली ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या सच में वहां पे मिसबिहेवियर हुआ था या नहीं हुआ था। दिस विल बी स्टेप नंबर 2। देन व्हाट स्टेप नंबर 3 विल बी कि ये कमेटी जब कुछ बेसिकली अगर जज को गिल्टी मानती है, राइट, इफ दे फाइंड द जज टू बी गिल्टी, द इम्पीचमेंट मोशन मस्ट बी पास्ड इन द बोथ द हाउसेस with a simple majority or basically 2/3 of MPs present and voting there, right, and they will decide that what kind of punishment that judge should be like get, right. अब आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि अगर दैट जज इज फाउंड गिल्टी तो किस किस प्रोसेस में हमारे पास किस किस स्टेप में हमारे पास वो गिल्टी मानेंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट दे विल बी गिवन, राइट। अब ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया हैज मेनी इम्पीचमेंट अटेम्प्ट्स, सो बट नो इंक्वायरी कमिटी हैज एवर बीन फॉर्म्ड। अब तक कोई इंक्वायरी कमिटी हमारे पास नहीं है इस चीज के लिए। इफ जज इज डूइंग सम सच काइंड ऑफ मिसबिहेवियर तो उस चीज को इंक्वायरी के लिए कोई हमारे पास मेंबर कमिटी है या नहीं, तो नहीं है, राइट। Now this means that these move are rare and this shows that strong disagreement with the judgment right now. इसीलिए this news is very important to us, right? Now अगर हम इस larger issues को देखें तो ये reflect करता है, ये highlight करता है sensitive nature of the court decisions related to what religion, community right, place of worship and social harmony, right. It also connects us broader ideas about the political issues also and the gap that could be seen with judicial overreach versus judicial restraints and how courts should like handle religious or cultural disputes also. And it also tells about the boundary between legal orders or social sensitivities also. Doesn't matter how many rules and regulations we are making when it comes to religion, हमेशा हमेशा से ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट्स को, राइट, एंड इवन द लोकल गवर्नमेंट हैव टू टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी ऑफ द इश्यूज। ठीक है, हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहीं ना कहीं साइड रखना पड़ता है लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ द इश्यूज, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, राइट, as I said before also, India is very sensitive because of the diversification, so many communities, right, so many differences, right. Understood till here? Okay.
So now with this we understood that wanton sorry. So now with this we understood that the controversy was there on December 1, 2025, and Swaminathan of Madras High Court ruled that devotee should be allowed to lit the Karthi Gai Deepam lamp, right? And it is like controversial because जो oppositions है, management है, दरगाह की management है, वो कह रही है कि पहले यहाँ पे light नहीं करते थे, right? It was not practiced there now. But अभी इसी time पे क्यों हो रहा है? Is there a political reason to it? So basically management के कुछ issues थे that they came up with, but then it was rejected by the judge, right? So the temple authorities plus Dargah management objected to this, and state government refused to implement the orders and citing risk of communal tension. उन्होंने बोला कि अगर नहीं करेंगे तो there will be like religion biases that could be seen, इसीलिए allow कर देते हैं with some taking measures, right? So now that was implemented. So basically जो हम बात करते हैं 101 और 120 की, which handles the taking decisions for the court and high court, right? So this block assembly submitted an impeachment notice in Lok Sabha, and they invoked Article 217 and Article 125, which talks about removal of High Court judge for proven misbehavior and incapacity. ठीक है, basically they are saying कि जो भी जज ने डिसीजन लिए थे, ठीक है, जो उनके हक में डिसीजन लेने चाहिए थे उससे ज्यादा they took decisions beyond than that, right? Now it talks about allegations in the notice also as judicial overreach interfering in religious practices, right? The biasness would be seen over here, and it also talks about favoritism, right? Now this could be mentioned in the ethics also, that how favoritism and biasness could be seen in the current affairs. Now political or ideology की बात करें तो this influence judgment also and acting against secular principles of the constitution, which could be used in the sociology as well. Understood? Okay. Okay, coming to the next news. Wanton negligence on the Goa blaze. A very important and very terrifying news that came. So, in like December 2025, just few days back, a horrific tragedy struck in Goa at a popular nightclub and restaurant called Birch of Romeo Lane, right? That is located in Arpora village, North Goa. Okay. A fire broke out ground at midnight and resulting in one of the deadliest club fires in recent years. So, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, right? And we'll try to understand कि क्या क्या measures ले सकती थी वहाँ की club, वहाँ की management, और क्या क्या measures नहीं लिए. And to this, how government will respond, and to this, how society will take it, and how it will impact us also, right? So the blaze basically reportedly started in the kitchen area या फिर उसके आजू बाजू. So possibly it triggered by firecrackers या फिर gas या cylinder blast हुआ था. So within minutes, like fire spread throughout the entire building. So the club was crowded, right? And with about 100 people on the dance floor when it began. So rescue efforts were like hampered because of that. The club had like narrow constrained access. Fire engines could not reach the building and had to be parked roughly 400 meters away. ठीक है, तो ये सारी negligence है जो हमें देखने को मिली है from the management, right? So because of this gross negligence, there were like missing emergency exist, और ना ही प्रॉपर फायर सेफ्टी दी गई थी, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं था फॉर द सेफ्टी मेजर्स, एंड पॉसिबली नो फायर डिपार्टमेंट क्लियरेंसेस वाज आल्सो देयर, राइट, इन द इनसाइड इन द क्लब, राइट? So especially staff and those downstairs were trapped, and in the end 25 people died, including both club staff or basically tourists, right? And there were like several other people who were injured in this case. Now, in response, there was like a public outrage that was seen. The union and state government and police and regulatory authorities, they initiated investigation and lodged FIR, ठीक है, on the club owners और management के अंदर भी, right? तो जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, राइट, ओनर्स हैं, उनके अगेंस्ट ये एफआईआर फाइल की गई है अभी. सो दिस हैव बीन अ कॉल फॉर अ फुल ऑडिट ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और बेसिकली स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के बारे में ये बात करती है. हमेशा ऐसे ही होता है कि जब तक वो इंसिडेंट नहीं होता तब तक वो हमारे दिमाग में घुसता नहीं है, राइट? नाउ बिकॉज दिस इंसिडेंट हैज अकर्ड, राइट, सो देयर आर सर्टेन मेजर्स दैट गवर्नमेंट विल बी टेकिंग, right? So now this is like tells about the firstly basically fire safety norms also, and about accountability for the officials also, basically who allowed like illegally built permitted club structure to operate, right? So in some this news we'll understand that this is disaster was not accidental, right, but invisible result of systematic failure, regulatory neglect, corruption, or basically complicity, and also about the poor enforcement, right? And this is like repeated disgraded for the public safety norms. Now because it is like saying that the want basically wanton is when it is repeated, okay? Again and again it is seen, right? So this negligence is seen again and again.
This is why it is named as wanton negligence. Okay. Up now, this is important. Now this is important for GS paper 2, right? Because it is tells us about governance, right? Comes under regulatory bodies, public safety, institutional accountability, right? What measures we should take, right? Then talks about DS3, that disaster management, क्या क्या measures हमें लेने चाहिए, right? And about infrastructure and urban governance also. GS paper 1, as it talks about social issues, workers, vulnerable groups, ethics essay, duty of care, negligence, value of human life, and governance ethics, right? So these are the things that will be covered in this news. अब हुआ क्या कि this a big fire broke out in this club, and basically 25 people died, right? And including staff, tourists और हमारे जो बाकी लोग थे, right? They were injured. So the blaze seemed to have like started either in the kitchen या फिर कोई firecrackers की वजह से या फिर कोई cylinder was blast. Now this fire became very deadly, right? So these are the like the main reasons. There are like main different reasons. So the fire turns into a very mass casualty, right? Because like each line, right? Each line below the links directly linked to the different things to us, right? जो भी हमने measures अभी देखे हैं, या तो fire basically या तो cylinder blast हुआ था, right? और there were like different negligence that was seen from the management also. अब अगर हम बात करते हैं कि पहले तो सबसे पहले तो कि कोई proper हमारे पास emergency exist थी ही नहीं, सबसे पहला reason तो ये. अब अगर emergency exist नहीं होती, right? Building used by the public must have like clear and must have exit, हमेशा एक exist होनी चाहिए, right? दूसरा गुड इवैक्यूएशन प्लान नहीं था, राइट? दिस इज द अनदर रीजन दैट वी कैन कम अप विद कि इवैक्यूएशन प्लान का मतलब ये होता है कि स्टाफ को पता होना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, राइट? दे शुड नो दैट हाउ वी हैव टू लीड द पीपल आउट, राइट? हाउ वी हैव टू सेव देम. बेसिकली उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट? उनको बेसिकली ट्रेन किया जाए उस डायरेक्शन में, राइट? फिर उसके बाद नैरो और ब्लॉक्ड एक्सेस रोड्स, जो बेसिकली जो फायर इंजन होते हैं या फिर एम्बुलेंसेस होती है, राइट? उनको टाइम पर पहुंचना चाहिए, राइट? दीज मेजर्स शुड बी गिवन देम ऑन द टाइम, राइट? तो चौथा हमारे पास हो सकता है कि पॉसिबल मिसिंग लाइसेंस आल्सो, सेफ्टी सर्टिफिकेट्स आल्सो. सो द क्लब रिपोर्टेडली लैक्ड वैलिड एंड बेसिकली फायर सेफ्टी मेजर्स, और इसके लिए उन्हें पहले से बताया भी जाता है, राइट? पर फिर भी उसके बाद मेजर्स लिए नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस यहाँ भी देखने को मिलता है, राइट? देन वी हैव प्रायर रेगुलेटरी वार्निंग इग्नोर्ड. तो बेसिकली अथॉरिटी को एज आई सेड कि प्रीवियसली दे आर लाइक फ्लैग प्रॉब्लम्स कि दीज सर्टिफिकेट्स, दीज मेजर्स शुड बी मेंशन्ड इन योर क्लब्स और एट योर प्लेसेस. अगर वो नहीं मेंशन होते तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस in recent years. Understood? अब बात करते हैं कि लीगल और क्रिमिनल एक्शन की. अब बात करते हैं लीगल और क्रिमिनल एक्शन की. तो इसका मतलब ये है कि पहला एक्शन होगा दैट इज एफआईआर अगेंस्ट ओनर या फिर मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजर, ठीक है? तो एज एफआईआर हैज बीन लाइक finalized, right? As this means that police are treating the incident as potentially criminal, ठीक है? इसका मतलब ये है कि this is treated as criminal, right? Criminal negligence, basically this is like seen as homicide also, right? Now this can lead to arrest and prosecutions also if basically investigation find that owner ignored all the measures that were mentioned, right? That should be taken. अगर ओनर को गिल्टी मान लिया जाता है तो he will come under these conditions. Now PIL is asking for court monitor probes and state-wide association also. So a public interest litigation asks the court to supervise a proper investigation and order a fire safety audit for all similar businesses also. नाइट क्लब्स में, राइट? होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, बार्स में बेसिकली ये बोला गया है बाय द गवर्नमेंट दैट दीज मेजर्स शुड बी टेकन आउट, राइट? Now when we talk about this कि PIL basically strong actions मान रही है against these actions and there should be like closure of demolition for places without any valid license या फिर clearances के. अगर किसी के पास valid license नहीं है, safety measures नहीं दिए जा रहे हैं, तो that place should be shut down. This is what the government is saying. Understood? Now अब basically इसको एक्सीडेंट की तरह ट्रीट इसलिए नहीं किया जा रहा है. It is known as wanton negligence. इसका मतलब ये है कि बेसिकली these are like repeating patterns, ठीक है? बार बार ये चीज देखने को मिली जा रही है, राइट? बार बार देखने को मिल रहा है कि सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं बाय द अथॉरिटी, राइट? So places that attract crowds are like sometimes built or run without following the rules, right? Even when regulators notice problems, enforcement is very weak, right? The result is repeated, tragedies that could like have been prevented with proper these actions, right? Then उसके बाद ये जो word है, right? This tells us that these rules existed but were not followed or enforced properly, right? This is why this comes under the negligence. तो इसीलिए
ये बोला गया है कि प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज जो है हमें इसकी वजह से देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस नेग्लिजेंस, ठीक है। अब इसमें ज्यादा प्रॉपर प्रॉब्लम किसकी होती है, दिस यू हैव टू राइट इन द एथिक्स, कि पहले तो विक्टिम्स और फैमिलीज को प्रॉब्लम होगी, राइट, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ, राइट, मेडिकल बिल्स, कंपैशन क्लेम्स, ट्रॉमा, सर्वाइवर्स, राइट। फिर उसके बाद प्रॉब्लम होगी, देयर विल बी लाइक क्रिमिनल ट्रायल्स और पेनल्टीज आल्सो, ठीक है। ओनर्स और मैनेजमेंट्स में they will be prosecuted, right, if they found guilty they'll face prisons and terms and fines because of that. तीसरा, इंस्पेक्शंस और क्लोजर्स, ठीक है। इंस्पेक्शन और क्लोजर्स की बात करें तो अथॉरिटी में टेम्परली शट द नाइट क्लब्स और बेसिकली बिजनेसेस दैट लैक क्लियरेंसेस एंड एनी सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक फेयर की बात करें और टूरिज्म इम्पैक्ट की बात करें, नाउ पीपल विल बी लाइक अफ्रेड टू गो एट सच प्लेसेस, टू सच क्राउडेड प्लेसेस, राइट, एंड दिस इज अ साइकोलॉजिकल कंसर्न दैट वी कम अप विद। जब भी हमें कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो हम भीड़ भड़ाके वाली चीजों पे, जगहों पे जाना बंद कर देते हैं, राइट। तो बेसिकली कहीं ना कहीं दिस विल बी लाइक इम्पैक्ट इकोनॉमी एज वेल, राइट, as like people will take measure according to their willingness, right. फिर उसके बाद बात करते हैं पॉलिसी में प्रेशर की, that will be like call for strict audits, there will be certain managements, rules and regulations and amendments will be seen by the government and by the authorities, right, by the club members, by the restaurants, by all the places where crowd is seen in large, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास, ये कॉन्सिक्वेंसेज इस न्यूज की वजह से हमें देखने को मिलेंगे, अंडरस्टूड, ओके। अब बेसिकली बात करते हैं लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेटर की। तो बेसिकली इसमें क्या है कि पॉलिसी इशू यहाँ पे देखने में मिली है और क्यों फिक्सिंग की जरूरत है। तो देयर आर द लाइक सिस्टमैटिक gaps implied by the facts, right. So this is very important because it tells us about the better enforcement and not for the notices. हमेशा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनता है बट द ग्राउंड रियलिटी इज ऑलवेज डिफरेंट, राइट। दिस आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी न्यूज एंड दिस वी हैव सीन आल्सो, राइट। हमेशा ग्राउंड रियलिटी जो है डिफर करती है। So issuing demolissions या फिर demotions will not help, right? That should be followed, right? If they are not followed, if they are not coming in action, right? Those rules and regulations on paper will not do anything good to us, right? Then strong basically inspection होनी चाहिए, frequent renewals होने चाहिए, right? Safety clearance होना चाहिए और वो renew होता रहना चाहिए, right? One time checks are not enough for us, right? Then emergency access और planning जो है वो municipal level के हिसाब से होनी चाहिए, right? So urban planning must ensure that emergency vehicles can reach crowded commercial zones properly, right? ये मैनेजमेंट हमारे पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंडेटरी सेफ्टी ट्रेनिंग्स और इवैक्यूएशन ड्रिल्स होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि वी आर फेसिंग सर्टेन सिचुएशंस तो उसमें एक्ट कैसे करना है, व्हाट आर द मेजर्स वी हैव टू टेक, हाउ वी शुड हेल्प ईच अदर, राइट। सो ये ड्रिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अवेयरनेस और कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ओनली ऑफ द मैनेजमेंट but of us also, citizens also, right? We should be aware that what kind of scenarios could be like come up if we are like at this such crowded places, right? And how we should act. So इसलिए public awareness होनी जरूरी है। फिर उसके बाद transparent licensing records होने चाहिए। Public access to venue safety certificates help people to dangerous places. अगर कहीं पर दिख रहा है that the place is dangerous, right? Will you go to that place? No, right? So this is why transparency should be there, right? Another example that you can write in governance and politics, right? ओके अब बेसिकली जो कोर्ट है वो मॉनिटर करेगा ऑडिट को, ठीक है। अब बेसिकली क्या हेल्प करेगा, पहले तो कैसे होगा कि लिस्ट करेगा सारे जितने भी नाइट क्लब्स हैं, बार्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं स्टेट में जितने भी हैं, राइट। देन इट विल लाइक इंस्पेक्ट ईच साइट ऑफ इट, राइट। जितने भी फायर क्लियरेंसेस है बेसिकली, जितने भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स है, राइट, जितने भी एग्जिट रूट्स हैं, राइट, एंड हमारी इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, उन सब को पे ही नजर रखेगा, इम्पैक्ट करेगा उस साइट पर। देन क्लासिफाई साइट्स ऑल्सो as it will be complicated, right, as it will like partially compliant also with specific remedial steps will be taken, और basically non compliant में closure till fixed, right, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक वो basically safety के measures में नहीं आ जाता है, it will not be open, right. So these are the measures that will be taken by the government, right. फिर उसके बाद enforce करेगा immediate action for a serious violations, जितना भी अगर closure for demolitions है, right, where structure risk is extreme, then the measures will be taken by the government, right. Then periodic reporting भी होगी कोर्ट से जो ensure करेगा हमारी compliances को, understood. Now, this news tells us about the public safety, right? This news tells about the regulation and enforcement. This rules tells about urban governance, ठीक है? कि if you are planning, right? If you are planning to have development, right? What kind of measure government should take? What responsibility we being citizens have, right? How we should basically behave if we are facing such trauma, right? And disaster management के बारे में बात करता है. Then it also talks about the accountability also, right? Accountability not only by the government, by us also, by as citizens also, right?
अगर तुम्हें इसमें आंसर लिखना है तो पहले तो यहाँ पे फैक्ट लाइन लिखो, राइट, एक्सप्लोर करो इसके फ्लोज को, ठीक है, फ्लोज मतलब इंस्पेक्शन करो, ठीक है, इन्फोर्समेंट के बारे में तुम यहाँ पे लिख दो, प्रपोज करो क्लियर और प्रैक्टिकल मेजर्स, जैसे कि ऑडिट्स होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जिसके बारे में मैंने बात करी, एक्सेस टू द रोड होना चाहिए, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए, ठीक है, एंड कंक्लूड करो विद बैलेंस बिटवीन बिजनेस इंटरेस्ट और पब्लिक सेफ्टी, राइट, एंड देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स दैट यू कैन इंक्लूड इन दिस व्हिच यू कैन राइट. पहला है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, राइट, देन सेकंड वन इज फायर सेफ्टी, एंड थर्ड वन इज ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद इमरजेंसी एग्जिस्ट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, म्यूनिसिपल एनफोर्समेंट के बारे में यहाँ पे बात हुई है, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन के यहाँ पे बारे में बात हुई है, और दूसरा हमारा यहाँ पे डिजास्टर रिस्पॉन्स के बारे में यहाँ पे बात हुई है, राइट. आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू. कहानी समझ में आई? So this deadly fire at Birch nightclub, right? It came in like North Goa and killed 25 people. And early evidences points to like ignition in the kitchen or from fire workers. But the tragedy is like was made for like worse because the club lacked basic fire safety compliances. इसीलिए there are certain measures that the government is taking, and also there have been like audit passed, or there are certain things that was like given to citizens also, and that we have to understand कि सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है. These are not only the duty of management या फिर government. हमारी भी ड्यूटी है. We are also responsible for each and every act that is like going through us. Okay. So I hope this is understood कि FIR जो है basically owners के against और managers के against फाइल कर दी गई है, right? And PIL जो है वो भी फाइल की गई है कोर्ट अंडर मॉनिटर प्रोब एंड स्टेट वाइड फायर सेफ्टी ऑडिट्स के लिए, राइट. व्हाट आर द मेजर्स दैट वी शुड टेक, ठीक है. फिर उसके बाद गवर्नमेंट में शट डाउन और इंस्पेक्ट सिमिलर क्लब्स लैकिंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है. नाउ बिकॉज दिस इंसिडेंट इज लाइक हाईलाइटेड, राइट, एंड सो मेनी पीपल आर किल्ड, so finally there will be certain measures which will be taken by the government, right. So basically उन्हीं के लिए जितने भी बेसिकली इंस्पेक्ट किए जाएंगे, जितने भी हमारे पास क्लब्स हैं, बार्स हैं, राइट, क्राउडेड प्लेसेस हैं, अगर वो अंडर सर्टेन कंडीशंस आर नॉट कमिंग, सेफ्टी जोन्स में नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वन केस बिकॉज इट शोज अबाउट द रेगुलेटरी फेलियर, राइट. वीक इन्फोर्समेंट के बारे में बताता है, और ये बताता है कि because it is like told basically you are not coming under safety measures, you have to take these certain perspective, but again if they are not following up, so these measures are ignored, और ये मैं बताता है कि weak enforcement के बारे में. And this highlights poor urban planning also and emergency access also, which is very important for polity and Indian society. This raises questions on public safety, corruption and accountability, right. Now what need fixes, पहले तो regular और strict safety inspections होनी चाहिए. फिर दूसरा enforcement होना चाहिए notices का. अगर तुम्हें बता दिया गया कि ये measures तुम्हें देने हैं, right, you are not coming under the safety zones, this place is not safe, right, these are the measures you should take, so they should be taken by the management, right. Then clear accountability होनी चाहिए among the municipal और fire authority as well, right. Mandatory education होना चाहिए, trained staff होना चाहिए, right, as is was seen in this case also कि basically वहाँ पे staff train ही नहीं था, जिसकी वजह से ज्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप पहले बता दो कि दैट प्लेस इज सेफ और नॉट, सो दैट पीपल कैन अवॉइड गोइंग देयर. Is it understood? Okay. So with this, we'll end today's class, and I'll see you at the same time. Thank you.